Assalamu alaikum. So I'm looking tired because I've had a long day in theatre as well as in clinic, and apart from that, I had to do a vaginal delivery for a patient who has had a cesarean section. तो cesarean section अगर किसी पेशेंट का पहले हुआ हो और दिस टाइम वो vaginal birth जारी हो तो ये एक स्ट्रेसफुल और बहुत जिम्मेदारी का काम होता है एक डॉक्टर के लिए. एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी एंड फॉर जूनियर डॉक्टर्स एज वेल एज अ वर्चुअल टीचर. तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डिसीजन ऑफ हैविंग अ वजाइनल डिलीवरी आफ्टर वंस यू हैव हैड अ सिजेरियन सेक्शन, ये एक बड़ी इन्फॉर्म डिसीजन होनी चाहिए. आपको पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए एंड नॉट द फिगर्स दैट यू प्लक आउट ऑफ थिन एयर, बल्कि फिगर्स जो कि बैक्ड अप बाय द स्टेटिस्टिक्स हों. और उसके लिए आप लीफलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी हैज़ गॉट वेरी गुड लीफलेट अबाउट वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उसको डॉक्यूमेंट करें कि आपने पेशेंट के साथ इस डॉक्यूमेंट की रोशनी में ये डिस्कशन की है. In order to have a vaginal delivery after a cesarean section, it is very important कि उस pregnancy को term तक जाने दिया जाए, at least to its due date, sometimes even post dates, because it is important कि you give it a chance for the nature to start the labor on its own. The chances that a labor that starts naturally, it is more likely कि it will lead to a normal birth and a process which are favored by the nature. जूनियर डॉक्टर्स के लिए एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसे डिसीजन में टेक अ डिसीजन ऑफ वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन एंड इन अ सेटअप जहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इमीडिएटली. देयर इज हेल्प अवेलेबल एंड देयर इज एक्सपर्टीज अवेलेबल टू प्रोवाइड दिस केयर. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसे कन्वर्ट कर सकें. एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक्चुअली आई फील हेल्प करता है फॉर अ सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी बिकॉज इट टेक्स अवे वो पेन्स जो पेशेंट्स को अक्सर मिसगाइड करती हैं और वो स्कार की पेन कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं. वो दोज पेन्स आर टेकन अवे एंड चांसेस ऑफ नॉर्मल बर्थ आर इंक्रीज देयरफॉर ऑल्सो द पेशेंट रिलैक्सेस. Similarly, if you need to do a cesarean section in emergency, then the same epidural can be topped up as well. In patients के लिए continuous monitoring with CTG is required. An expert or a doctor who is experienced should be available to monitor that labor, and we need to watch progress of labor and in order to have an outcome which is healthy for and is useful and is something that we desire both for the patient as well as for the baby. So कम से कम नेचर को अपने हाथ में लीजिए, मॉनिटर करें और उस पेशेंट को नेचर को असिस्ट करें बाय योर प्रेजेंस एंड मेकिंग श्योर कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू आर रेडी टू प्रोवाइड केयर फॉर एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन. वरना सब्र के साथ इफ यू कैन लेट देम गो टू देयर ड्यू डेट एंड अलाउ फॉर द नेशनल लेबर टू स्टार्ट, दैट इज व्हाट वुड गिव देम द बेस्ट आउटकम. सवाल ये कि इसको करना चाहिए या नहीं, दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम एंड वील टॉक अबाउट इट लेटर.